जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान की सबको मुबारक और आई होप कि आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत दुआएं। 2-4 मिनट लेट होने की माजरत। ये प्रेजेंटेशन बहुत एग्जॉस्टिंग और टैक्सिंग और लोडेड हो सकती है। देर आर अराउंड 164 स्लाइड्स। लेकिन मैं आपको ये श्योर करूंगा कि इट विल बी वर्थ योर टाइम। वी मे टेक मोर देन 90 मिनट्स बट इट विल बी वर्थ योर टाइम एंड आई श्योर यू कि इफ यू लिसन टू दिस conversation, this presentation carefully, take your notes and do the revision according to the guidelines I'll be providing in this presentation. I'm confident that your grade will improve, inshallah, by 1 or 2 grades. काफी यूजफुल बात इंशाल्लाह आपको बताएंगे इसमें। जाहिर है ये 2 ईयर का कोर्स है, ए लेवल का, तो इसको इन्हें कवरिंग इट इन ए स्पैन ऑफ 90 मिनट 100 मिनट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने कुछ किया ऐसा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। आई कैन अश्योर यू दैट इट विल वर्थ योर टाइम। स्टूडेंट्स टेकिंग एएस और ए लेवल एग्जाम्स इन इकोनॉमिक्स इन दिस May June सीरीज, आई श्योर यू इट विल वर्थ योर टाइम और इंशाल्लाह आपका ग्रेड एग्जाम तो ग्रेड इंप्रूव करेगा अगर आप इस प्रेजेंटेशन को केयरफुली सुने, अपने नोट्स लें और जैसी गाइडलाइन प्रोवाइड की है उसके मुताबिक रिवीजन और करें इसकी। In the first part, I'll be concentrating on common areas. In the middle, in the second part, I'll be concentrating on paper 2, and in the third part, I'll be focusing on common topics between paper 2 and paper 4, and the last part will only focus on paper 4. And I'll let you know when paper 4 begins, because those who are taking only paper 2 or AS exam can then leave that session. जी मैं अपने यही स्कूल में पढ़ाता हूँ। मेरे स्कूल का नाम किम्स है जी, विच इज इन गुलबर्ग। ये मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है जी। आज हम जो फोकस करेंगे नए एग्जाम पैटर्न के ऊपर, क्या असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका क्या ताल्लुक है कमांड वर्ड के साथ, डूज एंड डोंट्स फॉर राइटिंग एसेस, एग्जामिनर्स क्या चीज देख रहे होते हैं और क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपके लिए, और कुछ मार्क्स ऐसे करेंगे हम, उनका डिस्कस करेंगे उनको, और डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन के लिए भी टिप्स देंगे जी। इकोनॉमिक्स एज आई जस्ट सेड इट इज ए 2 year प्रोग्राम। economics जो है आप you can do it together or you can do it partly, like in one part you can do AS and the other part you can do A2. A2 there is no separate qualification for A2. ये हमारा jargon है, हम A2 कहते हैं normally, but there is no qualification with the name of A2 in Cambridge. It's either AS or A level. A level means complete A level or the second part of A level, and AS means the first part or first half of A level. सिलेबस में मार्च 23 में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गई हैं, और जो नया पेपर है May June 2023 का, दैट बी एज पर न्यू मार्क सिलेबस। पेपर 2 और पेपर 4 के पैटर्न में तब्दीलियां हैं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव पहले 4 होते थे, अब 3 हो गए हैं। विल टॉक अबाउट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। और पॉइंट बेस्ड मार्किंग होती थी, अब हम चले गए लेवल बेस्ड मार्किंग के ऊपर। इसका डिफरेंस क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। जी सबसे पहली बात आपके सामने आ गई, पॉइंट बेस्ड मार्किंग और लेवल मार्किंग का डिफरेंस। पॉइंट बेस्ड मार्किंग, जिसको हम टिक बेस्ड मार्किंग भी कह सकते हैं, कि 1 tick meant 1 mark, 2 ticks meant 2 marks, और अगर एक बच्चे के 8 ticks हैं तो he got 8 marks और she got 8 marks। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं ऐसा होती थी। मैं मिसाल देता हूँ, लेट्स अज्यूम कि पब्लिक गुड के बारे में क्वेश्चन है और 1 नंबर है पब्लिक गुड की एग्जाम्पल देने का। तो स्टूडेंट गिव 2 एग्जाम्पल्स। उसने लिखा एजुकेशन, रॉन्ग, एजुकेशन या स्कूल्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। और दूसरी एग्जाम्पल उसने दी स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। तो जो क्रॉस लग गया एजुकेशन या स्कूल की एग्जाम्पल पे, और टिक लग गया स्ट्रीट लाइट की एग्जाम्पल पे, तो उसको 1 मार्क एग्जाम्पल का फिर भी मिल गया, हालांकि उसने एक एग्जाम्पल गलत दी और एक ठीक दी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। लेवल बेस्ड मार्किंग ऑन द अदर हैंड क्या है कि जिसमें एग्जामिनर पूरा ऐसे पढ़ता है, पूरा ऐसे पढ़ने के बाद ही मेक्स अप हिज माइंड एंड मेक्स एन ओपिनियन कि किस लेवल पे है। जब लेवल तय कर लेता है, मिसाल के ऊपर 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और लेवल 3 के मार्क्स हैं 6, 7, 8, तो फिर वो तय करता है कि ये लेवल 3 जो है ये 6 मार्क्स वाला है, लोअर लेवल 3 है या मिडिल है या टॉप है। अगर टॉप लेवल 3 है तो 8 मार्क्स, मिडिल लेवल 3 है तो 7 मार्क्स, और लोअर लेवल 3 है तो 6 मार्क्स। तो ये लेवल मार्किंग के अंदर ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच होती है। तो इसमें अगर मैं एक बच्चे का पेपर मार्क कर रहा हूँ या कोई एग्जामिनर एक पेपर बच्चे का पेपर मार्क कर रहा है, तो लुक एट द
entire skipped the whole content. और अगर लगता है कि एक बच्चा जिसने कोई एग्जांपल भी गलत नहीं दी, कोई नेगेटिव कोई ऐसा कमेंट नहीं दिया जो इरेलीवेंट था और ऐसे बहुत कोहेरेंट था और बहुत वेल रिटन था और कंसाइज था, तो वो लेवल 3 में चला जाएगा। और वो आंसर जिसमें अच्छी बातें हैं पर कुछ इनकंसिस्टेंसी भी है, कुछ इरेलीवेंट मटेरियल भी है, तो वो लेवल 2 में चला जाएगा। तो इन अ वे देयर बी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आई शुडंट बी यूजिंग देयर वर्ड, बट ओवरऑल अप्रोच पे जब लेंगे तो फिर ऐसा बच्चा जो स्ट्रीट लाइट भी लिख रहा है और स्कूल भी लिख रहा है, तो पब्लिक गुड के बारे में बात कर रहा है, तो आई प्रॉब्ली मे नॉट टेक दैट कैंडिडेट और द एग्जामिनर मे नॉट टेक दैट कैंडिडेट टू लेवल 3। ये स्लाइड नंबर 10। ए लेवल इकोनॉमिक्स जो है, एएस इकोनॉमिक्स, इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हैज 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसकी ड्यूरेशन 1 आवर है, एंड पेपर 2 हैज a duration of 2 hours now, and it has 3 questions, 1 compulsory data response question 20 marks का, then there will be 2 sections, 1 for micro, 1 for macro. Micro में 2 questions होंगे, you have to attempt 1 of the 2 micro questions, and macro में भी 2 questions होंगे and 1 out of the 2 macro questions. तो आपको choice मिल रही है, पर it's less choice compared to the choice which students were getting, candidates were getting till November 2022, जब last former या ओल्डर सिलेबस के मुताबिक एग्जाम्स हो रहे थे। A2 में भी 2 पेपर हैं, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 3 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, but since these questions are little more tricky, Cambridge has allotted more time for paper 3 compared to paper 1. Though paper 1 and paper 3 both have 30 questions each, paper 3 has 1 hour and 15 minutes. Paper 4 similar to paper 2 of AS has 2 hours ड्यूरेशन, और बिल्कुल वही पैटर्न है, 1 डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन, 1 out of 2 माइक्रो क्वेश्चन एंड 1 out of 2 मैक्रो क्वेश्चन। 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, पहले 4 होते थे। एप्लीकेशन का एक असेसमेंट ऑब्जेक्टिव था विच इज नो लॉन्गर देयर। 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग दैट इज AO1, एनालिसिस दैट इज AO2, एंड एवेल्युएशन दैट इज AO3। तो आई विल यूज द एब्रिविएशन फॉर AO1 knowledge understanding KU, I will use the abbreviation for AO2 analysis AN, and I will use the abbreviation EV for evaluation, that is AO3. Students and candidates and even some teachers struggle to differentiate between these 3 assessment objectives. So I am just going to give you an overview of these 3 assessment objectives. First, AO1 KU, knowledge understanding. KU, to demonstrate knowledge understanding, you need to give, a candidate needs to give a definition, a formula, an example, maybe some examples, and maybe some simple calculations. That is for demonstrating knowledge and understanding. The second assessment objective is AO2 analysis, AN, and analysis include impacts, relationship, cause, and effect. If this happens, then this will happen. For example, analysis may include if inflation rises, the fixed wage earners would lose because their purchasing power will reduce. Now that is analysis. The effect of inflation on fixed wage earners. Another effect of inflation could be on exports. A higher inflation rate may make exports price comparative, less price comparative, and that may make exports expensive, and local goods will lose demand both in home and domestic market as well as in the international market. Again, the impact of inflation on exports and maybe on trade deficit. So that is analysis. Impact, relationship, cause, and effect. That is part of analysis. The third objective, AO3, evaluation. EV, evaluation is assumptions, limitations, strengths and weaknesses, and judgments and conclusions. Inflation, consequences of inflation. So inflation will make local goods less price competitive. But what if inflation of another country is higher? So assumption that inflation in our country is comparatively more, then the effect which is described in analysis will be there. Like inflation will make locally made goods less price competitive when inflation is higher than the inflation rate of other countries. So that's the assumption. What if other countries have removed trade barriers? Now, inflation on one hand will make our goods less price competitive. On the other hand, removal of trade barriers by other countries may make our goods price competitive again. So that is another assumption which we could take, that tariffs and trade barriers imposed by other countries have not changed. Inflation on one hand makes locally made goods price less price competitive. But what if our currency loses value? If exchange rates fall, that effect of
higher inflation on the prices of our goods may be eroded and may be taken care of by the weakening of currency, because weakening of currency will make our goods less price, more price competitive, and prices of our goods may go down in the international market if our currency becomes weaker. So strength and weakness. For example, inflation makes exports expensive, but exports may still go up if incomes in other countries are going up. So inflation is making goods expensive, but income is rising. So the argument, the relationship between inflation and export is not that clear and not that strong. It is not essential that whenever there is inflation, exports are certainly going to go down. And then there should be a conclusion and judgment. I'll talk about that as well. Now, we move on to do some exercises. This is exercise 1. There are 3 statements, A, B, and C. Please do the matching exercise and find a appropriate match for each statement which is in front of you. Do you think statement A is more like AO1, that is knowledge understanding, or AO2 analysis, or AO3 evaluation? And do it for statements B and C as well. In case you think one statement qualifies for more than one assessment objective, then choose the highest one. For example, you think statement A has both AO1 element of knowledge understanding, AO2 element of analysis, choose AO2 then. And similarly for other statements. Statement A, cigarettes are addictive, therefore a tax on them may not be effective in decreasing smoking. This is evaluation because it is a limitation of ability of tax to have an impact on smoking. So it is a limitation, that is why it is an evaluative statement. B, a tax on cigarettes makes them expensive and less affordable, forcing consumers to decrease smoking. It is analysis. It is a relationship between tax and smoking. Statement C is a definition of demerit goods. I did not use the word demerit good. Cigarettes are overconsumed as the costs associated with them are often ignored. Now that demonstrates knowledge and understanding. It is AO1. Now we do another exercise. The first statement, A, depreciation makes exports cheaper, imports expensive, raises net exports, reduces trade deficit, provided the PED for net exports is more than 1. Now that is analysis. The relationship between depreciation and net exports. Now please remember, PED for net exports is more than 1. It is Marshall-Lerner condition. It is now part of A2 syllabus. It is no longer the part of AS syllabus. Part B, statement B. Depreciation is more useful for economies having excess capacity, as they may be able to meet the extra demand for cheaper net exports without triggering inflation. It is an evaluative statement. It is telling us an assumption, having excess capacity, limitation or strength, that the impact of depreciation on net exports would be more strong in case excess capacity is available. And our statement C is the definition of depreciation, and that is AO1, knowledge and understanding. Now move to the last and the third exercise. Activity question is discuss the internal and external consequences of inflation. Now the solution. Statement A. One of the external consequences of inflation is that local goods become less price competitive both at home and abroad, which leads to a rise in trade deficit. The relationship between inflation and trade deficit, that is AO2 analysis. The cause and effect. Cause, inflation. Effect, rising trade deficit. B is definition of inflation. Knowledge and understanding, AO1. C, conclusion is a judgment, that is evaluation, AO3. To do more exercises such as this, there is a very useful book available, booklet, 3 booklets actually, skills exercise. They are available at Teacher Support website. They can give you this kind of exercise, that is we just did, and similar exercises about like words which are look similar, but actually they are not similar. Definitions, true and false statements, conclusions, etc. By writing essay, things you should avoid doing. Don't write, but you can. Write what you are asked to write.
मुझे लास्ट डिमांड के बारे में बहुत कुछ पता है, एग्जामिनर ने नहीं पूछा कि आपको क्या पता है लास्ट, उसने एक क्वेश्चन पूछा है. फॉर एग्जाम्पल, यूजफुलनेस ऑफ प्राइस लास्ट डिमांड फॉर प्राइसिंग. डू नॉट टेल मी formulas. Do not tell me what is elastic, what is inelastic. Do tell me what is the link of PD with a pricing decision. So restrict your question to answering that question, that point which examiner is emphasizing on. So read the question carefully and do not write what you know about the subject. Write only what you are required to write. Do not preempt questions. घर से तैयार किया हुआ क्वेश्चन नहीं आया पेपर में. पेपर का जो क्वेश्चन है, read it carefully and tailor your answer. Do not tailor the question. Do not overspend time. Time management will be very, very crucial, particularly now. Earlier, there were only 2 questions and you had 1.5 hours for paper 2, and you had 3 questions in paper 4 and you had 2 hours and 15 minutes. Now the available time has gone down. Earlier, there used to be 45 minutes per question. Now there are 40 minutes per question. You have to do 3 questions in 2 hours time. It's very important you do all 3 questions. Do not overspend time on one question. Remember, scoring marks from the first paragraph of the third question are more, the chances of scoring more marks, the chances of scoring marks from the first paragraph of the third question are more than the chances of scoring marks from, let's say, 5th or 6th paragraph or 7th paragraph of the second question. So stop second question when 80 minutes finish and move to the third question. Don't write everything you know about the concept. Do not draw a diagram if you are not certain and you are not sure about its relevance and not sure about its accuracy. Do not use numbers while making a diagram, because when you use number, you do not give the right spaces. You write 0, 10 and then you write for the same distance 12. So 10 और 0 का जो distance है, 10 और 12 का distance का 20% होना चाहिए. But students, actually candidates often ignore these things. So instead of that, label करें x1, x2 लिखने बजाय quantity लिखने के और number लिखने के. Label करें diagram properly. Do not forget to properly label diagrams. Do not assume that every downward sloping curve is a demand curve. Do not confuse micro and macro diagrams. माइक्रो के अंदर प्राइस लेवल है, मैक्रो में प्राइस लेवल है, माइक्रो में सिर्फ प्राइस है, मैक्रो में रियल जीडीपी है, माइक्रो में सिर्फ क्वांटिटी है. डू नॉट कंफ्यूज द टू. डू नॉट कंफ्यूज टर्म्स व्हिच लुक सिमिलर. ट्रेड डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट आर 2 टोटली डिफरेंट टर्म्स. और ये जो मैंने भी स्किल एक्सरसाइज की बुकलेट की बात की थी, उसमें ये एक्सरसाइज शामिल है जिसमें सिमिलर वर्ड्स इस तरह के और भी दिए हैं. मिसाल के तौर पर ट्रांसफर पेमेंट एंड ट्रांसफर अर्निंग, ये दोनों A2 के कॉन्सेप्ट हैं. ए ट्रांसफर पेमेंट AS में है और ट्रांसफर अर्निंग A2 में है. Things you must do: read the question carefully, identify command words, label the diagram properly. Now we do one example question. Explain the link between opportunity cost and production possibility curve. Command word is explain. Key concept is and economic terms are PPC and opportunity cost. And task of the question: provide the linkage. Establish the link between opportunity cost and PPC. You should draw a diagram, and you should draw a diagram when the question requires. You will not be able to get full marks if you do not draw a diagram in a question where examiner has specifically asked for a diagram. अपनी वर्किंग रूल शो करें फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को. कॉज पूछा है या इफेक्ट पूछा है? पूछा है बट हैज कॉज इन्फ्लेशन, या क्या पूछा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? पूछा है क्या इन्फ्लेशन से एक्सचेंज रेट कम क्यों होगा? डिड द एग्जामिनर आस्क वेदर राइजिंग इन्फ्लेशन, हाउ वुड राइजिंग इन्फ्लेशन लीड टू a depreciation of currency, or the question is depreciation of currency, how would it lead to rising inflation? So these are two totally different questions. Impact of inflation on exchange rate is different. Impact of exchange rate changes on inflation is different. So you need to understand the question. Whenever you make a diagram, start from the equilibrium point. In case you need to make a diagram for a rightward shift in diagram, show initial demand supply curve, show the initial equilibrium point, and then show the shift.
Whenever there is a question about the effectiveness of a policy, for example, effectiveness of supply side policy in controlling inflation, you need to talk about at least one more policy, or effectiveness of maximum price to control the consumption of merit goods. Maximum price will make merit goods more affordable, so that will help raise consumption of merit goods. However, you need to talk about another policy as well to do the comparison. If the question asks for explain, it's a command word explain, then please provide the definition, examples दें, formula दें और diagram draw करें अगर required हो. अगर relevant हो और required ना हो फिर भी draw करें, पर must be accurately labeled. Discuss के अंदर you must cover both sides, you must give analysis of both sides, and you must give a conclusion. Remember, there is no one right answer. Two candidates may be giving totally different conclusions, but they may both be getting an A grade, provided they have given strong arguments for their respective judgments. Command word: identify, state, outline, list, expect brief answers. Describe, use of word and vocabulary to interpret a graph, table, chart, or figure. Command word: compute and calculate. Of course, a numerical question, and to get full marks, you need to give working as well. But sometimes examiners may give full marks only on the basis of a completely correct answer. Comment. Again, skill exercise booklet is very useful. उसमें comment वगैरह की भी exercise शामिल है. So examiners often expect candidates to comment on the figure. So minus 1.5 PD would mean inverse sign. Minus sign would mean the inverse relationship between price and quantity is confirmed. 1.5 means more than 1. It means price elastic demand. It means the change in price will cause a more than proportionate change in quantity demanded. So that will be kind of comment. To what extent? Highlight the usefulness. Whenever there is a question with these command words, make sure there is another side. To what extent is useful? Yes, it is useful, but no, it is not useful. It is giving very good information. No, it is not giving good information. So do you agree? Again, both sides must be given. Analyze, as I mentioned, relationship, causes and effects. Evaluate, both sides should be covered, but conclusion should be given. Conclusion, इस तरह की conclusion ना दें, combination of both policies. No, it's not a conclusion. साथ उसके argument दें, क्यों आप recommend कर रहे हैं कि combination दोनों policies का use किया जाए. कौन से ऐसे अटेम्प्ट करें? मल्टी पार्ट क्वेश्चन होंगे पेपर 2 में, पेपर 4 में सिंगल पार्ट क्वेश्चन है. मल्टी पार्ट क्वेश्चन में एक पार्ट की सिलेक्शन के ऊपर या एक पार्ट अगर आपको बहुत अच्छा आता है, डू नॉट चूज द क्वेश्चन. क्वेश्चन वो चूज करें जिसके दोनों पार्ट्स आते हैं. पेपर 2 के अंदर आपका जो है जो ऐसे क्वेश्चन हैं उसमें 20 मार्क्स के ऐसे हैं. पार्ट ए 8 मार्क्स का है और पार्ट बी 12 मार्क्स का है. पार्ट ए का कमांड वर्ड एक्सप्लेन है और पार्ट बी का कमांड वर्ड डिस्कस है. जी, एग्जामिनर्स पार्ट ए के आंसर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं जी? 8 मार्क्स होते हैं पार्ट ए के आंसर में. 3 मार्क्स हैं नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए और एनालिसिस के लिए 3 मार्क्स हैं. टोटल 6 और 2 मार्क्स एवेल्युएशन के लिए हैं. In previous exam papers, there were no evaluation marks for part A of paper 2 questions, but now there are 2 evaluation marks. So पूरा scheme change हो गई. जो questions और marks schemes आपको available हैं, they probably are not enough to give you the proper guidance because there is no evaluation in part A of paper 2 questions. Knowledge understanding नंबरों के लिए definition, analysis के लिए example diagrams और evaluation के लिए limitations. Part B में total marks 12 हैं, 8 marks analysis और knowledge के हैं और 4 मार्क्स एवेल्युएशन के हैं और 1 मार्क आउट ऑफ दो 4 मार्क्स 1 मार्क इज फॉर एवेल्युएशन. जी, एग्जामिनर्स एवेल्युएशन मार्क्स जो है उनमें कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है. कंक्लूजन के नंबर नहीं मिलेंगे और एवेल्युएशन के नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने एनालिसिस में सिर्फ एक साइड कवर की है. मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपने सिर्फ इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं. आप जितनी मर्जी अच्छे इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस बता दें, यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर एवेल्युएशन एंड कंक्लूजन.
Now we do one question. This question is from May-June 2020 exam series, the variant 2-1, and it's question 4. Explain with the aid of a diagram one demand factor and one supply factor that can cause depreciation of a foreign exchange rate. Knowledge understanding के लिए you need to make a diagram and you need to show shift of the demand curve or the supply curve. You need to explain one demand factor with evaluative comment and you need to explain one supply factor with evaluative comment, and there will be 6 marks in total. Exchange rate is the external value of a currency in terms of other currency. Definition exchange rate, freely floating exchange rate where demand supply forces determine exchange rate without any intervention of the government. Depreciation of currency could be caused either by a decrease in demand or increase in supply. Demand for currency may fall due to a decrease in interest rates. Low interest rates make investments in our currency less attractive. Financial capital inflows fall and demand of currency falls and it results in depreciation. Now that is analysis. And this is a diagram which you can make. Remember, you need to label the diagram correctly. Exchange rate along y-axis, quantity along x-axis. Demand curve is shifting towards left because of the fall in demand. And the reason of the fall in demand is given on the previous slide, and that is fall in the interest rate. In evaluation, you may mention that even with low interest rates, people may continue to invest in their currency if they expect the exchange rate of their currency to increase in future. Or they may have more confidence and faith in the stability of that economy of the country. So a person may still wish to invest in US dollars if they are confident in the economy and political stability of America, and they may not bother even if interest rates offered by Federal Reserve Bank of America go down. So that could be evaluation. Supply of currency may rise because of low import tariffs. That will make imports cheaper, imports would rise, and so will the supply of currency. However, if income in the country is falling, people may not buy more imports even with a fall in tariff. That could be the evaluation. We now do another question. Discuss whether an appreciation of a country's foreign exchange rate is likely to cause both a rise in inflation and a decrease in employment in its economy. Analysis of the effect of appreciation on inflation, 4 marks. Analysis of the effect of appreciation on employment, 4 marks. So 8 marks for analysis and knowledge, and 4 marks for evaluation. And there is 1 mark for conclusion. So now we talk about analysis. Appreciation would mean increase in exchange rate. That is knowledge. It makes exports expensive, imports cheaper. Analysis. It reduces net exports if PED is more than 1. It is optional for AS students because this is now part of A2. Net export is part of AD, therefore AD will fall as a result of a fall in net exports. Demand for inflation will fall if economy is operating above full employment. AD will shift towards left and that will help control the price level. However, it may reduce output and employment if economy is operating below full employment. If economy is operating in Keynesian range where A is horizontal, a leftward shift in AD will decrease employment and output. But if economy is operating in classical range, that is vertical AF, a fall in AD, a downward shift in AD is more likely to decrease demand for inflation. Now there's the diagram. In this diagram, both price level and real output are falling. Analysis is continued. Imported raw material becomes cheaper because our currency has become expensive, and that will mean cost of production would fall, AS will shift to the right, and cost push inflation will also be controlled. Output employment in this case may go up. Because the rightward shift in AS, output and employment may go up. So the diagram is there. Inflation is going down, and this is cost push inflation because of decreased cost of production, prices are going down. Analysis, both demand pull and cost push inflation will fall. However, the impact on employment is uncertain. Evaluation. Other countries may remove trade barriers, making our exports cheaper once again. Thus, net exports may rise even with currency appreciation. Income inflation in the countries may rise, and net exports may continue to rise even after our currency has become stronger.
Other components of AD, for example, C and I or G may have gone up, and even though net exports are falling, other components of AD are rising, resulting in higher AD and higher inflation. So the conclusion, the impact of appreciation on inflation and employment depends upon PED, availability of excess capacity, and reaction of other countries. Now that's the conclusion. So that is a 12 marks question, sample answer I provided. Now we do another question that is about PED, short run versus long run. The PED for a new smartphone is estimated to be estimated at minus 0.8 in the short run and minus 1.5 in the long run. Explain the PED and suggest why the above estimates differ. Give definition of PED, 1 mark, formula of PED, 1 mark, and remember, please provide percentage change word. Percentage change in quantity divided by percentage change in price. And definition of PED, it measures the responsiveness of demand towards a change in the price of the product. Recognition that minus 0.8 is price inelastic and is less than 1. Definition of price loss demand is percentage change in quantity is less than percentage change in price. Never say a change in price causes a less change in quantity. That's not enough to get marks for the definition of price inelastic demand. Minus 1.5 is price elastic demand. In the long run, consumers get more time to find substitutes, so PED rises. In the long run, time is enough for new firms to enter and raise option for consumers. That can also give you 2 marks. The same question may be asked for PES. So sample answer, definition, and the formula is given on slide number 69. Price elastic demand, the definition is given the second line. It is when the percentage change in quantity is less than the percentage in price. Do mention percentage changes. Do not say price inelastic demand is when the change in quantity is smaller than the change in price. You will not get the marks. Now, let me give you 3 statements for a 2 marks question. And let me tell you, these statements look similar, but one will get 0, one will get 1, and one will get 2 out of 2. So statement, the question, what is price elastic demand? 0 marks. A price elastic demand when a change in price causes a change in quantity, 0. When change in price causes a larger change in quantity, maybe 1 out of 2. When change in price causes a more than proportionate change in quantity, 2 out of 2. Sample answer. In the long run, existing firms can raise production or new firms can enter. That may raise options for consumers, and that will lead to more PED. In the long run, consumers can have more time to search for alternatives. In evaluation, you may say new firms may not have a similar quality, or their quality may be different or poorer than the quality of existing firms, and that may not actually raise the choices and options for the consumers. Or maybe powerful advertisement may make consumers more brand loyal, and they may remain so even in the long run. And in the long run, PED may not rise. Now we do a question, and this is a very important question, and I think it is going to be a part of. It could be a question which could be in a future exam paper. Discuss if it is more useful for governments to have knowledge of the PED or the MED. Usefulness of elasticity for the governments. Remember, this question is not about the usefulness of PED or MED for producers. It is for the usefulness for the government. So the answer approach is clearly or should clearly be different. Usefulness of PED for the government. Analysis. It helps government determine indirect taxes and subsidies. To generate revenue, government may impose high taxes on goods which have low PED, because people will continue to buy those goods, or a higher percentage of people will continue to buy these goods even after taxes are imposed, and that may help government generate more tax revenues. However, if government's objective is to decrease the consumption, maybe of a demerit good, then indirect tax may not be effective since PED is low. In this case, where PED is high, you may impose taxes to lower the consumption. But if PED is low, lowering taxes
may not be effective. So this knowledge of PED is helping government to decide whether to restrict consumption of demerit goods through imposition of indirect taxes or through an advertisement campaign. Subsidies government can give to those necessities which have lower PED, and high indirect taxes may be charged on luxuries which have high PED. So government's entire tax and subsidy policy could be based on the knowledge of PED. Import tariffs may be imposed if PED is high. This will make imports expensive and force a majority of customers, a high percentage of customers, to switch to locally made goods. However, if PED is low of imports, then even a tariff may not be effective in reducing consumption of imports. In that case, import quota could be more effective. So that is the knowledge of PED for a government, usefulness of PED, knowledge for a government. Now, usefulness of MED for the government. During recession, income taxes may be decreased in areas or for industries where which produce normal goods, because during recession, demand for normal goods falls, and industries which produce normal goods are regions which concentrate on the producing of normal goods suffer more. So government may consider lowering income taxes. Government may consider imposing high income taxes in areas which produce inferior goods, because in those areas sales of industries are going up and government may generate more tax revenues from them. Indirect taxes may be decreased or subsidies may be granted on necessities to make them more affordable. So necessities are goods which have low income loss demand. So goods which have low income loss demand, government may give subsidies or may lower indirect taxes on them. Taxes on luxuries may be increased to generate tax revenue, and that is again, how would we identify, or how would government identify whether a good is a luxury or not? So income loss demand, a high income loss demand, more than one income loss demand is indicative that this product is a luxury. Evaluation. Both PED and MED are estimates and may not be accurate. They are calculated on the basis of past data. So results may not be relevant for decisions which are going to be made in future. And taxes and subsidies are often influenced by political decisions and not by the figures and estimates of PED and MED. Conclusion. For a more effective tax policy, PED, MED, and information about other socio-economic factors must be considered by the government. So that is a sample answer for this question. Additional information for this question is usefulness of cross-loss demand for the government. So as I mentioned earlier, substitutes, local goods are substitutes for imported ones. So you may impose, or the government may impose import tariffs, or may lower import tariffs on the import of goods whose local substitutes are not available. That is goods which have low cross elasticity of demand. Whereas government may impose high import tariffs on goods which have a high cross demand, meaning their local substitutes are available. To help stabilize prices, government may give subsidies to the complementary goods of agricultural goods which have a negative XCD. So, for example, government wants to make flour cheaper. So, government may give subsidies to wheat manufacturers. To help stabilize prices, for example, school textbooks, government may provide subsidies on complementary goods which have, such as paper. We now discuss use of diagrams in paper 2. Often candidates confuse macro diagrams. They do not label diagrams properly. So this segment will help you. I will give you tips where you can avoid mistakes, small mistakes which can cost you heavily. There are 4 types of diagrams mainly in AS course. One is production possibility curve, the 2 demand supply curves, and there are 3 types of demand supply curve: micro demand supply, macro demand and supply, and foreign exchange demand supply. Now this diagram is a downward sloping curve. Some may say this is a demand curve. It is not necessary that it's a demand curve. It depends upon the axis. Since axes are not labeled, we cannot conclude which type of diagram is this. That's why I say labeling the axis is vital. I will recommend my students to first label the diagram and then draw the diagram.
because labeling may be ignored after you have drawn the diagram. If we label this diagram, if we label good X and good Y, it becomes a production possibility curve. Production possibility curve is correct only when it fulfills three conditions. One, it is downward sloping, it is touching both axes, and x-axis and y-axis show different goods. Those two different goods could be any, good X, good Y. But if the examiner has asked for two goods, for example, examiner asked what is the impact of rising spending of government on tourism on other areas. So do provide tourism on x-axis and other goods on y-axis. Or for example, government, the question examiner is asking, what is the impact of improved infrastructure on the availability of defense goods? So do write infrastructure on one axis, and on the other axis do write defense goods. So if the examiner has provided two types of goods or one type of good, do mention that. If examiner is silent about that, you can mention any two types of goods to get full marks from a PVC diagram. Now, same diagram, but we have now put x-axis. On x-axis we have put quantity and y-axis price. Now this is a micro demand curve. It is useful for section B questions. It is not useful for section C questions, which are macro questions. Average price on x-axis, real output on x-axis, and average price is on y-axis. This is a macro demand curve. Again, three diagrams look similar, but they are different. It is AD. The previous one was D. That is demand curve for micro, AD for macro. Three differences in these two diagrams: price, average price; demand, aggregate demand; quantity, real output. So please do not confuse micro and macro diagram. They can cost you 1 or 2 marks, and that may shift your grade from B to C or A to B. The fourth diagram again looks similar, but along x-axis we have quantity of currency, and along y-axis we have exchange rate. Now this is the demand curve for the currency, foreign exchange market. Micro demand supply curves. Whenever there is a question about market, whenever there is a question about a single product, whenever there is a question about single product, please do mention micro or do draw a micro demand supply curve as shown in front of you. It is used to discuss the effect of the macro demand curve. Look at the three differences: P micro, price level macro; demand and supply micro, AD and AS macro; quantity micro; real income, real output macro. If the question is about the economy, use this diagram. That is on slide 90. If the question is about economy, if the question is about prices, if the question is about employment, if the question is about economic growth, use the diagram that is on slide 90. If the question is about a market, use the diagram that is on slide number 89. Demand and supply for foreign exchange market. Again, instead of price, show exchange rate. Instead of Q, write quantity of currency. So if the question is about the effects on exchange rate, use this diagram. Section of a diagram. Draw a PPC when the question is about choice, trade-offs, and opportunity cost. Example, draw a diagram to show the choice that Malawi faces when allocating its scarce resources between the production of tobacco and tourism. Provide tobacco on one axis and tourism on the other axis, because the examiner has given you the choice. Now, this diagram is 94 slide, very useful and can be used for every question of PPC. Now, this shows opportunity cost, this shows scarcity, this shows choices. Choice, scarcity, opportunity cost, all these could be proven with this PPC. Opportunity cost of raising tourism from Y1 to Y2 would be the opportunity cost of raising tourism from Y1 to Y2 would be decreased production of tobacco from X1 to X2, opportunity cost with the help of PPC. Choice. If the country chooses to have more resources for tourism and less resources for tobacco, they will move upward along the PPC. It is showing the 2 points on which are unlabeled, they are showing the choice.
scarcity. Either the country can have Y2 of tourism or X1 of tobacco. They cannot have both. In order to have Y2 of tourism, they have to accept a lower quantity of tobacco, that is X2. And in order to have more of tobacco, that is X1, they have to have lesser quantity of tourism, that is Y1. So that is scarcity. Points outside PPC cannot be obtained. That is scarcity. Let me emphasize again, this diagram of page 94, slide 94 could be used for every PPC question. PPC can also be used to examine the effects of following changes: economic growth, show it through a rightward shift in PPC. Reduction in unemployment, do not show a shift. That is movement from inside PPC to a point towards PPC. That a point that is inside PPC may be point A, and B is on PPC and move from point A to B while there is only one PPC drawn. That is enough for showing reduction in unemployment. Increase in resources, for example, increase in working population, rightward shift in PPC. And show the arrow, which could clearly tell the examiner that the PPC is shifting towards right. If the question is about market, show the demand and supply diagram of micro. Question, example, explain the effects of rise in income on the market of normal goods. For full 4 marks, show clearly the initial and new equilibrium points. Show the correct shift and label the diagram. Both demand curves should be labeled. Supply curve should be labeled. Both prices should be labeled. Both quantities should be labeled. X-axis quantity, Y-axis price. Now, whenever this question market comes, please remember 3-4 tips. 1, show which shift will take place. Will the demand curve shift or supply curve? In this case, it's a demand curve will shift. The first point is show that the demand curve will shift. Demand curve will shift, then show in which direction. In this case, it'll shift towards right. So clearly it show demand curve will shift to the right, will lead to excess demand. Do mention these words, excess demand or excess supply. If demand curve shifts towards right, excess demand. If supply curve shifts towards right, excess supply. That excess demand or that excess supply will lead to change in price. In this case, in this question, page number 96 wala jo question hai, demand curve will shift towards right. Demand will increase, which will increase demand to, which will shift the demand curve towards right, will lead to excess demand, will lead to high price and high quantitated. So please 4 चीजें बतानी है. कौन सा कब शिफ्ट होगा, किस तरफ शिफ्ट होगा, उससे एक्सेस डिमांड होगी या एक्सेस सप्लाई होगी, उससे प्राइस और क्वांटिटी ट्रेडेड पे क्या फर्क पड़ेगा. To get full 4 marks, you need to give 4 things. Which curve will shift, in which direction it will shift, will it lead to excess demand or excess supply, and will it lead to high price or low price or high quantity or less quantity. And of course, for the other 4 marks, you need to give the definition of normal good and examples, etc. Now this diagram is not showing equilibrium points, maybe 2 marks out of 4. This diagram is wrong, maybe 0 marks, because this candidate has not even bothered to label axis, and demand curve and supply curves are confused. Upward rising curve is demand curve, which is wrong. So micro demand and supply curves can be used to examine effects such as increase in the price of a substitute good, rightward shift of demand curve, excess demand, high price, high quantitated, increase in price of complementary good, leftward shift in demand curve, demand decreases, leftward shift in demand curve, excess supply, low price, low quantitated. Advertisement, rightward increase in demand, rightward shift, excess demand, high price, high quantitated. Increase in wages, indirect taxes, removal of subsidies, expensive raw materials, expensive inputs, leftward shift in supply curve, decrease in supply, leftward shift in supply curve, excess demand, high price, low quantitated. Macro demand supply curve. If the question is about economy, example, explain with the help of a diagram how contractionary fiscal policy would affect AD, prices and output. Now the word prices, plural. Prices means macro, price means micro. Price micro के लिए है एक single product की, और prices overall general price level of the economy को indicate करता है. Now we are at slide number 102. There are total 164 slides. 1 hour से कम हमें हुआ है. We should be able to finish in maybe
हाफ एन आवर जी, तो एडी लेफ्ट पर शिफ्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी क्या है? हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग या लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग? कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस एडी, हाई लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, high taxes, a budget surplus. That will decrease AD towards left, decrease price level, decrease real output. And again, the word excess demand is very important. Excess supply is very important. Now, in this case, AD has shifted towards left. AD has gone down. AD has shifted towards left. That has led to excess supply, lower prices, not price, lower prices, lower price level, lower output. And since lower output, less labor will be needed, less employment. A fall in AD will have a greater effect on output agar AS horizontal hai. AS horizontal hai Keynesian, AD leftward shift, more impact on output, employment, excuse me. Or AS vertical hai, AD falls, more impact on price level. This diagram can also be used to discuss inflation. Demand pull inflation के लिए AD shift करेंगे, cost push inflation के लिए AS shift करेंगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए AS शिफ्ट करेंगे, वर्कर्स की ट्रेनिंग ज्यादा होगी AS शिफ्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इससे ट्रेनिंग वर्कर्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से शिफ्ट इन बोथ AD AS भी आ सकता है, क्योंकि जब वर्कर्स की ट्रेनिंग होगी गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड मनी, AD भी शिफ्ट करेगा और AS भी शिफ्ट होगा. आई विल टॉक अबाउट इन मोर डिटेल अबाउट दिस टॉपिक. अब क्वेश्चन है एक्सचेंज रेट के बारे में. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स could provide a solution to Malawi's weak currency. Weak currency है तो कैसे आप एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, उससे करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे प्रोटेक्ट होगा. More exports means more currency would be demanded. More currency would be demanded means demand for currency will shift towards right. That will lead to excess demand of currency. That will lead to increase in exchange rate and the currency will no longer be weak. Remember, on y-axis, we will not show the price. We'll write the word exchange rate. Along x-axis, we will not write quantity. We'll write quantity of currency. And we'll use the word excess demand. Now, this diagram could also be used for exports changes, for inflation changes, for real income changes, for import changes, for economic growth changes, for interest rate changes. For example, exports rise, demand will shift to the right. Inflation rises, exports become less price competitive, demand for currency will shift to the left. Imports will look cheaper, imports will rise, supply of currency will shift to the right. Both will lead to excess demand of currency, excess supply of currency, and both will lead to a fall in exchange rate. So when inflation goes up, exchange rate falls. Very important topic of AS. Real incomes change. If people have more purchasing power, their real income have gone up, they will spend more on imports. Imports rise, supply of currency rises, excess supply, exchange rates fall. Imports rise, imports fall, for example. Supply for currency will shift to the left, excess demand, exchange rates will rise. Economic growth is slower, less imports, supply for import will shift to the left, excess demand, exchange rate will rise. Interest rates rise. I've already explained that, and I'll explain it in my later discussion as well. But remember, this is a very important topic. So if interest rates rise, investing in one's currency become attractive. Remember, this investment is different from the investment that is shown in AD. AD की जो investment है, वो फैक्ट्रियों में और मशीनरी में investment है. ये जो currency की investment है, that is not part of AD. Anyway, so when interest rates rise, investment in capital goods fall, AD falls. So we are not talking about investment in that is component of AD. We are talking about investment in currency. So when interest rates rise, investment in a currency becomes attractive. People get more reward from their currency, which is offering them high interest rate. So people will demand more of their currency. Demand curve will shift to the right. That will lead to excess demand. Exchange rate will rise. So remember, interest rates rise, exchange rates rise. Very important relationship. Interest rate and exchange rate. Data response question, also known as stimulus questions. Time management is crucial. Involve at least a lot of reading. So maybe you need to allocate 5 to 8 minutes to read the text.
and the data that is provided. It is a 20 marks question. You need to attempt it in maximum 40 minutes. Maximum 40 minutes. So maybe 5 minutes extra आपको रखने पड़ेंगे रिवीजन करने के लिए चीजों की. तो I recommend 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 30 to 35 मिनट. तो सिंपल बात हुई कि आपका अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, do not spend more than 3 minutes on that question. That's a tip. 6 marks question है, maybe 9 marks, 9 minutes for that question. So a multi-part question होता है data response question. 4 to 5 parts होते हैं इसके अंदर. ये पेपर 2 पेपर 4 के लिए सिमिलर है. पार्ट ए में कैलकुलेशन होती है या डाटा की डिस्क्रिप्शन होती है. पेपर 2 में ज्यादातर कैलकुलेशन होती हैं. पेपर 4 में कैलकुलेशंस कम है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन होती है डाटा की. पार्ट डी और पार्ट ई जो आखिरी होते हैं वो डिस्कस के होते हैं और वो तकरीबन 6 मार्क्स के होते हैं. और ज़ाहिर है डिस्कस का क्वेश्चन होगा तो कंक्लूजन जरूर प्रोवाइड करनी है आपने. मैं रिकमेंड करूंगा फॉर एवरी डिस्कस क्वेश्चन लास्ट 2 लाइन सेपरेटली लास्ट पैराग्राफ लिखें और लिखें देयरफॉर आई कंक्लूड कॉमा एंड देन गिव योर कंक्लूजन, ताकि एग्जामिनर को नजर आए कि आपने एक एफर्ट की है कंक्लूजन देने के लिए. तो पार्ट डी और पार्ट ई ऑफ डाटा एंड पार्ट बी ऑफ essay ऑफ पेपर 2 एंड part the essay of paper 4. These questions will start with word discuss. आखिरी पार्ट 1-2 डाटा के डिस्कस से स्टार्ट होंगे. पेपर 2 के पार्ट बी डिस्कस से स्टार्ट होंगे और जो क्वेश्चन हैं पेपर 4 के वो सारे के सारे जो एसेज हैं वो डिस्कस से स्टार्ट होंगे. इन सब क्वेश्चंस के लिए आखिरी पैराग्राफ में लिखें देयरफॉर आई कंक्लूड कॉमा एंड देन गिव द कंक्लूजन. एंड कंक्लूजन क्वेश्चन को रिपीट ना कर दें. कंक्लूजन में अपना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लिखें और लिखें कि चूंकि ये आर्गुमेंट है इसलिए मैं ये कंक्लूजन दे रहा हूं. कंक्लूजन की रीजनिंग देनी है. कंक्लूजन विदाउट ए रीजन, तो कंक्लूजन को हम कहते ही हैं रीजनिंग या जजमेंट. रीजनिंग के बगैर कंक्लूजन के नंबर नहीं मिलेंगे. लेवल डिफिकल्टी बढ़ती जाती है. पार्ट ए आसान होता है उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स आसान है और पार्ट ई ज्यादा एनालिटिकल होता है या पार्ट डी जो आखिरी पार्ट है. तो डाटा को कम से कम 2 दफा पढ़ें, एक दो क्वेश्चन पढ़ने से पहले और 2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ताकि आप क्वेश्चंस के मुताबिक रेलिवेंट एरिया आइडेंटिफाई कर सकें. डाटा रिस्पांस क्वेश्चन जो हैं वो कई दफा डाटा को रेफर कर रहे होते हैं और बताते हैं हाउ फार इज द इंफॉर्मेशन इन द 5th पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल सपोर्टेड बाय द एविडेंस इन टेबल 1. फॉर सच क्वेश्चंस mark the relevant portion and frequently consult while answering those questions, while answering that particular question. तो अगर आपने डाटा कंसल्ट करना है तो फिर आप जरूर बताइए कि आप कौन सा डाटा जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं और लेकिन इसके अलावा बाकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कीजिए. तो कुछ क्वेश्चन आपके ओपन एंडेड होते हैं जो डाटा के अलावा अदर इकोनॉमिक नॉलेज को भी चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल इज द एविडेंस गिवन इनफ, तो आप कहेंगे यस, और क्यों इनफ है, क्यों आपने उस डाटा से आपको क्या क्या मिल रहा है. मिसाल के तौर पर डाटा दिया हुआ है HDI के बारे में और GDP के बारे में, तो आप कह रहे हैं अब मैं ये वो यूज करता हूँ जो AI2 की एग्जांपल भी और AS की भी है, तो आई चेंज द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आपको डाटा दिया हुआ है प्राइसेस के बारे में, डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में, और आपको दिया हुआ है वेट्स दिए हुए हैं, तो आप उसके बारे में कमेंट करते हैं यस आई हैव द इंफॉर्मेशन, तो यूजफुल है, मैं ये बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन रेट कितना है, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर सकता इस इन्फ्लेशन रेट को बाकी कंट्रीज के साथ या प्रीवियस ईयर्स के साथ, बिकॉज डाटा फॉर प्रीवियस ईयर इज नॉट अवेलेबल. तो लिमिटेशन भी डाटा की बतानी है और डाटा की स्ट्रेंथ भी बतानी है. बताने डाटा इज यूजफुल और बताने कि डाटा इज नॉट यूजफुल. जी, स्टेट लिस्ट और आइडेंटिफाई में आपको वही इंफॉर्मेशन देनी है जो डाटा में दी हुई है. उसने अगर कहा कि स्टेट 2 पॉलिसीज विच गवर्नमेंट हैज यूज्ड, सप्लाई साइड पॉलिसीज की एग्जांपल दें, 2 पॉलिसीज जो इस डाटा में यूज हुई हैं, तो आपने डाटा में से रिपीट करना है. लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपने डाटा को रिपीट नहीं करना, अपने वर्ड में आंसर लिखना है. और जहां डाटा को रिपीट करें वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखें कि ये आप डाटा को कोट कर रहे हैं. इंडेक्स नंबर, परसेंटेजेस और एब्सोल्यूट नंबर में फर्क समझिए. बहुत कैंडिडेट्स गलत करते हैं. मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन रेट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 8% टू 2%. बच्चे कहेंगे प्राइसेस कम हो गई हैं. नहीं, प्राइसेस कम नहीं हुई, पहले 8% से बढ़ी हैं, अगले साल 2% से बढ़ी हैं. Both years prices went up. So fall in inflation is not decrease in price level. So price level दिया हुआ है या inflation rate दिया हुआ है. इंडेक्स नंबर है 100 बेस होता है आमतौर पर. 100 बेस है, 90 का मतलब है 10% डिक्रीज. हालांकि 90 लिखा है, माइनस नहीं लिखा हुआ. 90 प्लस नंबर है, पर 90 का मतलब है बेस ईयर के मुकाबले में 10% डिक्रीज है. तो इंडेक्स नंबर है, परसेंटेज है
या नंबर है, काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन देखिए सिमिलर, और देखिए कि मार्क्स में कैसे आंसर दिया होगा आपका। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस एग्जाम के पेपर के लिए, पेपर 2 के लिए क्या है जी? आपको पीईडी, एमईडी और क्रॉस ट्रांसप्लांट के फॉर्मूला और डेफिनेशन आने चाहिए। इलास्टिक इनइलास्टिक डिमांड का फर्क आना चाहिए। क्या फैक्टर डिमांड को इलास्टिक इनइलास्टिक करते हैं? पीईडी राइज क्यों करती है लॉन्ग रन में? साइन का क्या मतलब है एमईडी और एक्सीडी में? एमईडी पॉजिटिव का मतलब है नॉर्मल गुड, एक्सीडी पॉजिटिव का मतलब है सब्स्टिट्यूट्स, एमईडी नेगेटिव का मतलब है इंफीरियर गुड, एक्सीडी नेगेटिव का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एमईडी 0 का मतलब है नेसेसिटीज, एक्सीडी 0 का मतलब है अनरिलेटेड गुड्स। नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, नेसेसिटीज का फर्क, इंपैक्ट ऑफ पीईडी एमईडी ऑन प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजंस। पीईडी एमईडी और एक्सीडी का ताल्लुक रेवेन्यू के साथ, पीईडी का ताल्लुक रेवेन्यू के साथ बच्चों को आता है, एमईडी और रेवेन्यू का ताल्लुक लोगों को नहीं आता। इसको तैयार करें, एमईडी और क्रॉस ट्रांसप्लांट का फर्म के रेवेन्यू से क्या ताल्लुक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीईडी एमईडी एंड एक्सीडी फॉर फर्म्स एंड गवर्नमेंट फॉर दिस जून क्वेश्चन। मैं समझ रहा हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीईडी एमईडी एंड एक्सीडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलरली सो गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और मैंने थोड़ी देर पहले इसका सैंपल आंसर करवाया है। एडी के क्या कंपोनेंट्स हैं? एडी की जो इम्पैक्ट की जो चेंजेस हैं, एडी और एएस की शिफ्ट, ये एएस के हर बच्चे को लाजमी बनाने चाहिए, क्योंकि अगर आपने सप्लाई से पॉलिसी करना है एएस शिफ्ट हो रहा है, फिस्कल पॉलिसी करना है एडी शिफ्ट हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी करना है एडी शिफ्ट हो रहा है, इन्फ्लेशन डिस्कस कर रहे हैं एडी एएस शिफ्ट हो रहे हैं, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का फर्क बताना है एडी एएस की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एडी एएस की बात होगी, इंटरेस्ट रेट की बात होगी एडी की बात होगी, एक्सचेंज रेट की बात होगी एडी एएस की बात होगी। तो एक्सचेंज रेट बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, और एक्सचेंज रेट बढ़ने से एक्सपोर्ट महंगी हो जाती है, एडी कम होगा। तो एडी एएस का टॉपिक मैक्रो का क्वेश्चन करना है, आप विदाउट नॉलेज ऑफ एडीएस आप मैक्रो नहीं कर सकते पेपर 2 की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि आप जरूर पढ़ें कि आपको इंटरेस्ट रेट की चेंजेस का इम्पैक्ट, एजुकेशन की ट्रेनिंग का और इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग का इम्पैक्ट, और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट एडी और एएस पे पता हो। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो 3 हैं, फिस्कल, मॉनेटरी और सप्लाई साइड। प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन मेरे गेस्ट पेपर में शामिल है, प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन पे क्वेश्चन जी। और ये जो रोल है इन पॉलिसीज का डिफ्लेशन को ठीक करने में, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत हाई इन्फ्लेशन है, तो लाइकली क्वेश्चन होगा इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए इन 3 पॉलिसीज का क्या रोल है, इन्फ्लेशन के कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन मेरा जो गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि जनरली बता दें इन्फ्लेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो पूछेगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, लिंक बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट। ये जरा देख लीजिए जी, मैं इसी तरह बात करना चाहूंगा। आई डोंट नो कि अगर मैं आगे किया तो रिपीटिशन हो जाएगी, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लेशन का क्या ताल्लुक है एक्सचेंज रेट के साथ? इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर इंटरनली कम होती है, इसलिए इसको इन्फ्लेशन डिस्टर्ब करती है इंटरनल वैल्यू मनी को। परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होती है, मनी का वर्ड होगा इंटरनल के लिए, करेंसी का वर्ड होगा एक्सचेंज रेट के लिए। तो इन्फ्लेशन मींस प्राइसेस राइज, real income falls, ability to buy goods falls, real value of money falls. Inflation makes exports expensive, exports fall, demand for currency falls, excess supply of currency, exchange rate falls. So inflation goes up, exchange rate falls. Now in Pakistan this is precisely it is happening. Higher the inflation, weak currency gets more and more weak. Now we talk about exchange rate and inflation. Exchange rate falls, currency becomes weaker, exports become cheaper, exports rise, imports fall, net exports rise, AD rises, demand pull inflation. Exchange rate falls, imported goods become expensive, cost of production rises, import cost push inflation rises, cost push inflation rises. So when exchange rates fall, demand pull as well as cost push inflation goes up. So Pakistan is in this vicious circle. Inflation goes up, that leads to weakening of currency. Weakening of currency leads to high inflation. And then high inflation again leads to weakening of currency. And then weakening of currency again leads to high inflation. So this is a vicious circle. So this is a very important topic which is important for both paper 2 and paper 4. Benefits and drawbacks of appreciation of currency, increase in TOD. I did this question in today's presentation.
जी, करंट अकाउंट के डिफरेंट कंपोनेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। बच्चे करंट अकाउंट को समझते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें 4 सेक्शन है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। बैलेंस ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल सेक्शन, इनकम्स एंड ट्रांसफर। करंट अकाउंट के डेफिसिट की रीजंस, क्योंकि आपका करंट अकाउंट रह गया है पेपर 2 में, बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट चला गया है पेपर 4 में, तो मैं करंट अकाउंट से समझता हूं क्वेश्चन आएगा। पॉलिसीज टू ओवरकम द डेफिसिट, आप एक्सपेंडिचर स्विचिंग और एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग A2 में चला गया है, AS में नहीं है, लेकिन पॉलिसीज उसके अलावा आ सकती हैं कि इनका वर्ड को यूज किए बगैर एक्सपेंडिचर स्विचिंग और एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको जरूर, कि ये हो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन वेदर ए कंट्री कैन हैव ए ट्रेड डेफिसिट बट ए सरप्लस ऑन इट्स करंट अकाउंट एट द सेम टाइम। आंसर वुड बी yes, it is possible. A trade deficit may not lead to a current account deficit if there is a surplus in other 3 sections of current account, which are invisible section, services, incomes and transfers, and their surplus is more than the deficit of trade. That is only one section of current account. So if 3 sections have a surplus, it is higher than the deficit of trade, that will lead to a current account surplus. मैं बहुत क्विकली बातें बता रहा हूं, ये नोट्स ले लें और आप इस बात को बार बार सुन लें ताकि आपकी तैयारी हो जाए। Now there are 3 टॉपिक मैंने चूज किए हैं जो पेपर 2 और पेपर 4 दोनों के लिए कॉमन है। थोड़ा सा फर्क है वो मैं ज्यादा बताता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों में है, P2 और P4 में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिस्कस वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज डिजायरेबल। जो A2 के बच्चे हैं पेपर 4 कर देने वाले, वो इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का डिटेल में लिंक बता दें। AS के बच्चे ब्रीफली बता दें। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये A2 का टॉपिक है, AS बच्चों को आता हो कोई हर्ज नहीं है। आप जी बेनिफिट्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के, ड्रॉबैक्स क्या हैं, और एवेल्युएशन करनी है कि कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ डिजायरेबल होती है। तो बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से नेशनल इनकम बढ़ती है, लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट करती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ से लोग अपनी एजुकेशन पे ज्यादा पैसे खर्चेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, क्राइम रेट कम होगा, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगी। पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, जिससे अगर आपकी नेशनल इनकम ज्यादा बढ़ रही है और पॉपुलेशन कम बढ़ रही है, अफोर्डेबिलिटी बेटर क्वालिटी फूड की होगी, एजुकेशन की बेहतर होगी, एजुकेशन हेल्थ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, और आपके वर्कर्स ज्यादा स्किल्ड और प्रोडक्टिव हो जाएंगे, और ये आपके बेनिफिट है इकोनॉमिक ग्रोथ के। इस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट हैं हेल्थ केयर, बेटर हाउसिंग, बेटर क्वालिटी फूड, बेटर सैनिटेशन। गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि इनकम ज्यादा होंगी, लोग ज्यादा इनकम टैक्स पे करेंगे, ज्यादा इनकम से लोग ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा। गवर्नमेंट को प्रॉफिट के ज्यादा होने से कॉर्पोरेट टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे और टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होगा। इससे गवर्नमेंट बाकी उसका जो बजट है ज्यादा सरप्लस में चला जाएगा, और गवर्नमेंट विल हैव मोर फंड टू स्पेंड ऑन द वेलफेयर एंड ऑफ पीपल। जी, तो आपकी जो इससे, लेकिन चूंकि एडी बढ़ जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ से, इससे इन्फ्लेशन हो जाएगी, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्रॉबैक है। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, पर दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन कम होना, वो सफर करेगा। इस तरह इंक्रीज प्रोडक्शन एक्टिविटी एनवायरमेंट को डैमेज करेगी, और प्रेशर ऑन पॉपुलेशन सिटीज बढ़ जाएगा, लोग बेहतर जॉब्स के लिए सिटीज को माइग्रेट करेंगे, और इससे अर्बनाइजेशन होगी और रूरल और अर्बन डिवाइड बढ़ जाएगी। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में राइज, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड टू सम इंडिविजुअल्स और सम ग्रुप्स एंड सम रीजन्स। और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो हमने पाकिस्तान में विटनेस किया, कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर गई और इंपोर्ट भी ऊपर चली गई, क्योंकि व्हेन देयर इज मोर इनकम वी इंपोर्ट मोर फॉर कंजम्पशन एज वेल एज फॉर बिजनेसेस। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और आम बिजनेस के लिए भी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और कंजम्पशन के लिए भी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और इसके हिसाब की करेंसी पे डाउनवर्ड प्रेशर आ जाएगा। जी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिजायरेबल तभी है जब वो सस्टेनेबल हो, और सस्टेनेबल ग्रोथ वो है जो कि
कई सालों तक आप मेंटेन कर सकें। ये ना हो कि एक साल इकोनॉमिक ग्रोथ, अगले 4 साल रिसेशन में, जो कि हम पाकिस्तान में विटनेस कर रहे हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर करती है, आखिरी लाइन बता रहा हूँ, कि इनकम इनक्वालिटीज कम हो। मींस उसका जो बेनिफिट है वो सब लोगों को मिले, सिर्फ कुछ लोगों को ना मिले। ये ना हो कि रिच पीपल बिकम रिच एंड पुअर बिकम इवन मोर पुअर। इंटर रीजनल इक्वालिटी भी हो, मींस सिर्फ शहरों में ग्रोथ ना हो, सिर्फ पंजाब में ना हो, केपी में भी हो, बलोचिस्तान में भी हो, गिलगित बल्तिस्तान में भी हो, और पाकिस्तान के बाकी सारे रूरल सिंध और अर्बन सिंध में भी हो। और इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी भी ना आए। ये ना आए कि आज तो इकोनॉमिक ग्रोथ है पर बाद में एनवायरमेंट डैमेज हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को पुअर एनवायरमेंट में रहना पड़े। तो इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी भी ना हो। ये तीनों चीजें हों तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। Another important topic of paper 2 and paper 4. पेपर 4 में इसकी हेडिंग हो सकती है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है मनी सप्लाई को कम करना। गवर्नमेंट, ये पेपर 4 का टॉपिक है कि जो सेंट्रल बैंक है वो बॉन्ड्स परचेज कर ले। जब बॉन्ड्स परचेज करेगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी कमर्शियल बैंकों के पास, लोगों के पास, क्योंकि उनके पास बॉन्ड्स आ जाएंगे और लिक्विडिटी चली जाएगी सेंट्रल बैंक के पास, और उससे एबिलिटी टू लेंड मनी कम हो जाएगी और क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ये पेपर 4 है। लेकिन पेपर 2 के लिए इसको हम पढ़ेंगे कि इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जैसे मैं पेपर 4 के लिए बता रहा था कि बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाएंगी क्योंकि बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी अगर सेंट्रल बैंक बाई कर रहा है, और उससे उनके इंटरेस्ट रेट कम होंगे। तो बॉन्ड के बाई करने से उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं और प्राइसेस बढ़ने से उनके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में ये थोड़ा इसको देख लेते हैं दोबारा कि एक है क्वांटिटेटिव, ये मैं पेपर 4 के लिए पहले बात कर लूं क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक पेपर 4 में है, पेपर 2 के बच्चों के लिए ये नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मनी सप्लाई कम हो और इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बॉन्ड सेल करे, बाई नहीं करे। मैं गलत बता रहा था, बॉन्ड को सेल करे। जब बॉन्ड सेल होंगे कमर्शियल बैंकों के पास बॉन्ड्स आ जाएंगे और लिक्विडिटी चली जाएगी सेंट्रल बैंक के पास। तो बॉन्ड जब सेल करेगा सेंट्रल बैंक तो बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। बॉन्ड की सप्लाई बढ़ने से उनकी प्राइसेस कम हो जाएंगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का मतलब होगा लेस मनी सप्लाई, हाई इंटरेस्ट रेट। एएस के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना काफी है, हाई इंटरेस्ट रेट या लेस मनी सप्लाई। तो अब हम पढ़ेंगे हाई इंटरेस्ट रेट के क्या इंपैक्ट हैं। मैंने चूज किया हाई इंटरेस्ट रेट ओवर लो इंटरेस्ट रेट। क्यों? आज हम विटनेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, तो मोर रेलिवेंट इज इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज। लेकिन आप इसको प्रिपेयर कीजिए डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट के लिए जी, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जी। इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज के इंपैक्ट कंजम्पशन पे क्या है, इन्वेस्टमेंट पे क्या है, एक्सपोर्ट्स पे क्या है, इंपोर्ट्स पे क्या है, एडी पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन पे क्या है, और एक्सचेंज रेट पे क्या है। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे, इफ इट रेज द रिवार्ड फॉर सेविंग, इफ इट रेज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, if it raise savings, if it encourage people to save more, it will reduce consumption, particularly of non-essential high price items. लोग हॉलिडेज पे कम जाएंगे, लग्जरी हॉलिडेज पे कम जाएंगे, लोग गाड़ियां कम लेंगे। हाँ, पोटैटो अनियंस की डिमांड हो सकता है चेंज ना हो क्योंकि वो एसेंशियल आइटम्स हैं, पोटैटो अनियंस, और एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो कंजम्पशन कम होती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, पर्टिकुलरली ऑफ दोज आइटम्स विच आर नॉन एसेंशियल एंड हाई प्राइस। इंटरेस्ट रेट के इंपैक्ट, इंक्रीज के इंपैक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट फॉल करती है। हमने पहले बताया कंजम्पशन फॉल करेगी, अब बताया इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी। सी और आई दोनों एडी के कंपोनेंट हैं, एडी फॉल करेगा। एडी फॉल करने से हमने अगला बात बता दी कि इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन फॉल करती है। तो दैट इज अ लिंक बिटवीन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज का इंपैक्ट, रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन नेशनल करेंसी। अब मैं बता रहा हूं impact of increase interest rate on exchange rate. जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, people will prefer to put their money in that currency which is offering them high interest rate, high reward. इससे net financial hot money inflow बढ़ जाएगा, डिमांड फॉर करेंसी बढ़ जाएगी, और लोग आउटफ्लो कम करेंगे, दूसरी करेंसी में पैसे कम रखेंगे, सप्लाई फॉल करेगी। इससे एक्सेस डिमांड होगी करेंसी की, और एक्सेस डिमांड होने से एक्सचेंज रेट राइज कर देगा। नाउ दैट इज ए ब्रीफ लिंक बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट। आप एक्सचेंज रेट को वाई एक्सिस पे शो करें, क्वांटिटी ऑफ करेंसी को एक्स एक्सिस पे, डिमांड सप्लाई कर्व बनाएं, और डिमांड कर्व को राइट वर्ड शिफ्ट करके इनिशियल एक्सचेंज रेट लो शो करें और फिर एक्सचेंज रेट हाई शो करें। तो आप इसको इसका ग्राफ भी बना सकते हैं।
आप है जी एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट डिमांड पुल पे और कॉस्ट पुश पे। अब एक्सचेंज रेट बढ़ गए हैं, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट कर गए हैं, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगी, इंपोर्ट चीपर, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, इंपोर्ट राइज कर जाएंगी। सिंस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप होता है, नेट एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ एडी है, एडी कम हो जाएगा, एडी कम होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। हमने दोबारा से एक लिंकेज बता दिया इंटरेस्ट रेट का डिमांड पुल इन्फ्लेशन के साथ। तो अगर क्वेश्चन हो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल होगी, तो मैं आपको बता रहा हूं इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सी भी कम होगा, आई भी कम होगा, नेट एक्सपोर्ट भी कम होंगे। ये तीनों कंपोनेंट एडी को कम करेंगे और एडी कम होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट। इंपोर्टेड, चूंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, पहले बताया एक्सचेंज रेट बढ़ने से इंपोर्ट चीपर हो जाएंगी, इंपोर्ट चीपर होने से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल चीपर हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। और आप एएस को राइट वर्ड शिफ्ट करके एडीएस के डायग्राम में इसको शो भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बताया आपको और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बताया। तो हाई इंटरेस्ट रेट विल हेल्प कंट्रोल बोथ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब एडी का इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे और रियल इनकम पे। एडी फॉल हो रहा है, चूंकि सी भी फॉल हो रहा है, आई भी फॉल हो रहा है, नेट एक्सपोर्ट फॉल हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी, जीडीपी फॉल करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट राइज करेगी। तो इसमें आप मल्टीप्लायर का जिक्र भी कर सकते हैं जो कैंडिडेट पेपर 4 दे रहे हैं। इंपोर्ट्स के ऊपर इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट का, इंपैक्ट ऑन इंपोर्ट इज अनसर्टन। किस तरह? क्योंकि इंपोर्ट एक्सचेंज रेट के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट गोज अप, exchange rate goes up, import becomes cheaper, imports rise. However, high interest rate discourage borrowing and consumption, and imports may also fall. So one effect, import are going up, one effect, import are going down. Net effect on import is uncertain. और import का impact हम AD भी नहीं ले रहे, पर AD के बारे में हम श्योर हैं, तो C भी कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से आई भी कम हो रहा है और नेट एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। हाँ, मैंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बात नहीं की, जिन गवर्नमेंट ने बहुत पैसे बारो किए होते हैं, जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ जाती है। जी, सप्लाई साइड ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये एक कॉमन टॉपिक है पेपर 2 और पेपर 4 का, और मेरे गेस्ट पेपर में शामिल है। फिस्कल टूल्स क्या हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डायरेक्ट टैक्सेस और बजट्स। एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी के टूल हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएं, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लो टैक्सेस और बजट डेफिसिट करें। टैक्स कम करने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, ज्यादा कंजम्पशन और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। बहुत क्लियर वर्ड, डिस्पोजेबल इनकम और रियल इनकम को कंफ्यूज ना करें। डिस्पोजेबल इनकम का ताल्लुक है टैक्सेस के साथ, रियल इनकम का ताल्लुक है प्राइस लेवल के साथ। सी ज्यादा हो जाएगा, आई ज्यादा हो जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पहले ही मैं बताया ज्यादा हो रही है फिस्कल पॉलिसी में, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी में एडी बढ़ जाएगी। एडी का बढ़ना डिमांड पुल टूल है, ये एक डिमांड साइड पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि ये एडी के थ्रू जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है, और अगर इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी हो तो एडी को कम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंक्रीज होने का इंपैक्ट सप्लाई साइड पे भी आता है, और वो है इस टॉपिक का एम्फोसिस, सप्लाई साइड ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एजुकेशन ट्रेनिंग पे होगी, इससे वर्कर्स की स्किल्स इंप्रूव होंगी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, यूनिट लेबर कॉस्ट, एक यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट कम होगी, क्योंकि वर्कर उतनी ही वेज में, उतनी ही सैलरी में, उतने ही आवर में ज्यादा आउटपुट बनाएगा, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे आपको प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा और एएस राइट पर शिफ्ट होगा। ये सप्लाई साइड एस्पेक्ट है फिस्कल पॉलिसी का। इसी तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो और सब्सिडीज पे हो, ये भी प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ाएंगे, प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करेंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे, एएस राइट पर शिफ्ट होगा, पीपीसी राइट पर शिफ्ट होगा, सप्लाई साइड एस्पेक्ट। इसी तरह टैक्सेस का कम करना, ये सप्लाई डिमांड साइड टूल है। टैक्सेस कम होने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है, पर टैक्सेस के कम होने से इंसेंटिव टू वर्क भी बढ़ता है और बिजनेसेस एनकरेज होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज होती है, हाई स्किल वर्कर आपकी कंट्री में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्स कम है। जैसे दुबई में लो टैक्स होने से कई लोग यूरोप और यूके से वहां शिफ्ट हो रहे हैं और वहां जाके बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। तो लो टैक्सेस अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लो टैक्सेस अट्रैक्ट करते हैं हाई स्किल इंडिविजुअल, जिससे प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो ये भी एक सप्लाई साइड एस्पेक्ट है। तो फिस्कल पॉलिसी का सप्लाई साइड से मैंने लिंक बताया। अब मैं बिफोर कि मैं आपको अपना गेस्ट पेपर दूं पेपर 2 के लिए, मैं थोड़ी सी बात अपने स्कूल के बारे में करना चाहूंगा। मैं इस वक्त ए लेवल के अंदर एक बच्चों का जो क्राइटेरिया बन गया है किस स्कूल में जाना है, तो बच्चे बहुत फोकस कर रहे होते हैं फन के ऊपर। बहुत लेजिटिमेट डिमांड है आपकी एज में फन नहीं करेंगे तो किस एज में करेंगे।
बहुत लेजिटिमेट डिमांड है फन करना, लेकिन प्लीज आप इस फन की चीज को अपनी स्टडी के ऊपर कंप्रोमाइज ना करने दें। फन लेजिटिमेट डिमांड है, लेकिन फन एट द एक्सपेंस ऑफ स्टडीज आपके करियर को, आपके फ्यूचर को डिस्टर्ब कर सकता है। आपका ओ लेवल का रिजल्ट अच्छा आता है इस जून 2023 के एग्जाम में, प्लीज प्लीज सिर्फ फन के एस्पेक्ट को देख के किसी ऐसे स्कूल में ना चले जाएं जहाँ की पार्टीज और जहाँ का फन कल्चर बहुत पॉपुलर है। ऐसे स्कूल में जाएं जहाँ आपको अच्छी एजुकेशन के साथ कोई रीजनेबल फन की अपॉर्चुनिटी भी मिले। वी प्रोवाइड यू दैट अपॉर्चुनिटी। आई एम वन ऑफ द टीचर्स, आपने मेरी टीचिंग की स्किल देखी है। ये इस प्रेजेंटेशन में जाहिर है बहुत कम टाइम है, मैं बहुत तेज बात कर रहा हूँ, बहुत कम टाइम है, मैंने बहुत चीजें बतानी है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बात को वॉच करेंगे कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स टीचिंग एक फन है। मैं साथ ही जिक्र करूंगा अपने छोटे भाई का, रियल ब्रदर मलिक, जो अकाउंटिंग के टीचर हैं, एंड मोस्ट ऑफ यू हु स्टडी अकाउंटिंग एट ओ लेवल एंड ए लेवल आर अवेयर ऑफ हिज नेम। अकाउंटिंग हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। बिजनेस स्टडीज में हमारे दो टीचर हैं, नबील और साद अगर पूरा टीचिंग में कंसिडर करेंगे तो बीइंग ए सीनियर बिजनेस स्टडीज टीचर, लेट मी प्रेडिक्ट के साद विल बी द नंबर 1 बिजनेस स्टडीज टीचर इन लाहौर। ही इज एक्चुअली द नंबर 1 टीचर जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कर रहे हैं। वो नबील को कई लोग जानते हैं, वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस दोनों के बेहतरीन और पॉपुलर टीचर हैं। जफर इकबाल हमारे केमिस्ट्री के टीचर, वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर टीचर। जफर के साथ अजहर साहब सीनियर फिजिक्स के टीचर। इन दो सीनियर टीचर के साथ हमारे पास सीनियर टीचर असद जमील और इसहाक साहब बायो के लिए, और साथ हमारे पास यंग टीचर नबीर मैथमेटिक्स के, उनका यूट्यूब चैनल देखिए नबीर का, और साथ राहिम आईटी के और कंप्यूटर स्टडीज के टीचर, और मुबशर नबी कंप्यूटर स्टडीज के टीचर, यंग टीचर, रिलेटिव यंग टीचर, उर्दू की हमारी बड़ी डायनामिक टीचर साइमा। तो ये हमारी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है। अगर मैं किसी टीचर का नाम भूल गया हूँ यहाँ पर जल्दी में तो मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा। तो आप अगर ए लेवल को प्लीज नॉन सीरियस ना लें। ए लेवल आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की फाउंडेशन है। ए लेवल तगड़ा किया होगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अपने ए लेवल को फन के लिए कंप्रोमाइज ना कीजिएगा और आप अच्छे स्कूल को चूज करें। एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम एजुकेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस करेंगे विद रीजनेबल फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल। मेहर और साद राजा हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ओवरसी कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन फॉर पेपर 2 अवेलेबल है सोशल मीडिया के ऊपर। आपके जो क्वेश्चन हो, मैं आई मे नॉट बी एबल टू आंसर देम टुडे, लेकिन मैं जरूर आंसर करूंगा। हमारे सोशल मीडिया पे आप क्वेश्चन डालेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं मैं उन क्वेश्चन को देखूंगा और जरूर उनके आंसर करूंगा। ये आप देख लीजिए थ्रेशोल्ड जून 2022 का, कि कंपोनेंट 2 की मैं बात कर रहा हूँ। 40 मार्क्स का पेपर था जो अब 60 मार्क्स का हो गया है। इसमें सिर्फ 18 मार्क्स के ऊपर एक ग्रेड आ गया, सिर्फ 18 मार्क्स पे। लेकिन ये ना समझिए कि वेरी इजी है 18 मार्क्स लेना भी, ठीक है। 18 मार्क्स पे आया जी, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया था। इट वाज डिफिकल्ट पेपर, क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन था, अब मैं बताऊं क्यों नहीं है 18 मार्क्स, मैं जरूर ये क्वेश्चन था, प्राइस लास्ट डिमांड लिमिटेशन बताइए पीडी की, कि आप एक प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग कर रहे हैं या पीडी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसीज हैं उनकी लिमिटेशन बताएं। आप पीडी को एक फर्म चाहेगी कि कम करें, कोई नंबर नहीं मिले इस बात के। पीडी कम करने की पॉलिसीज क्या है? एडवर्टाइजमेंट करें, कोई नंबर नहीं मिले इस बात के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, कोई नंबर नहीं मिले। क्वालिटी इंप्रूव करें, बेटर कस्टमर शेयर करें, यूनिक फीचर ऐड करें। तो ये पीडी कम करने की पॉलिसीज हैं, लेकिन नंबर नहीं मिले। क्यों? क्वेश्चन था पीडी को कम करने की जो पॉलिसीज हैं उनकी लिमिटेशंस क्या है, वो नहीं लिखी किसी बच्चे ने भी। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, शायद 12 में से 2 या 3 नंबर लिए। ये जनरस बता रहा हूँ, 1 या 2 लिए। क्यों? लिमिटेशन ये थी कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फंड चाहिए, पैसे चाहिए। ये बच्चों ने लिखा, बस 1 नंबर आ गया। एक और लिमिटेशन है एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट मे नॉट बी इफेक्टिव। मैंने एक तरह की अपने स्कूल की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, इट मे नॉट बी इफेक्टिव। मैंने भी की है बात अपनी फैकल्टी के ऊपर, इट मे नॉट बी इफेक्टिव, मे बी इफेक्टिव। एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं, आपका कंपेटिटर भी कर रहा है, ये लिमिटेशन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फंड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। कंपटीशन पे आपको कंट्रोल नहीं है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, नए कंपेटिटर भी आ गए। तो लिमिटेशन नहीं बताई, तो 12 में से 1 या 2 नंबर आए, तो इसलिए 18 नंबर पे आई एम नॉट सरप्राइज कि इसका थ्रेशोल्ड ये है। पेपर 4 में बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जनरली स्पीकिंग मेरा एक्सपीरियंस है कि पेपर 4 में कैंडिडेट्स परफॉर्म बेटर देन पेपर 2, क्योंकि पेपर 4 के क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं।
उसका ग्रेड थ्रेशोल्ड देख लीजिए 42 ऑफ 70 विच इज हाई परसेंटेज। तो ये ग्रेड थ्रेशोल्ड है जून 2022 का। अब टोटल नंबर पेपर 2 और पेपर 4 दोनों की 60 हो गए हैं जी। तो ये है एनी क्वेश्चन प्लीज पोस्ट देम ऑन मीडिया। ये पेपर 2 के लिए प्रेजेंटेशन मुकम्मल, पर पेपर 4 वाले बच्चे अभी रुकेंगे। अब है जी पेपर 4, आखिरी 20 स्लाइड्स। पेपर 4 कैंडिडेट्स को 2 क्वेश्चन करने हैं, माइक्रो में से एक और 2 मैक्रो में से एक, और 14 मार्क्स हैं नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के, एनालिसिस के 6, एवेल्युएशन सॉरी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के और एनालिसिस के 14 हैं, और एवेल्युएशन के 6 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक। कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज होगा जब प्राइसेस चेंज होती है या इनकम चेंज होती है, और मैं इसके ऊपर जो एम्फोसिस होगा मेरा क्वेश्चन पे, और वो ये है कि क्या बताएं नेचर ऑफ गुड्स, क्या प्राइस इफेक्ट सेम होता है हर गुड्स के लिए या डिफरेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का क्या ताल्लुक है, गिफन गुड इंफीरियर होती है पर हर इंफीरियर गिफन नहीं होती, और इंटरफेस के एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, कॉन्वेक्स क्यों नहीं होते, और अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी या इंडायरेक्ट टैक्स लग गए तो भी प्राइस बढ़ने का इम्पैक्ट ही है। और ये गवर्नमेंट पॉलिसी का अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये ना समझिएगा कि मैं आता नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब है कि इंडायरेक्ट टैक्स लग गया तो वो या रिमूव हो गया तो प्राइस कम हो गई। बाकी अगर आपका आंसर तैयार है प्राइस कम होने का क्या इफेक्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, तो आप आंसर कर देंगे। सबसे आखिरी जो बुलेट पॉइंट है पेज 154 पे, ये मेरा कैश का क्वेश्चन है, कंपेयर द पीडी फॉर नॉर्मल इंफीरियर गुड्स। We now discuss the impact of decrease in price of a product on consumer equilibrium. तो ये मैं देखता हूं, अगर ये मैं स्लाइड को, ये चूंकि एनिमेशन में नहीं चल रही, ये मेरी एनिमेशन में तैयार थी, ये आई एम अनेबल टू रन इट थ्रू एनिमेशन, तो ये वो उसका फायदा नहीं होगा जो है। लेकिन बेसिकली सबसे पहले हमने ब्लू लाइन ड्रॉ की, ब्लू लाइन ड्रॉ की और इंटरफेस को ड्रॉ किया, तो ई नॉट पे हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, जहां पे ब्लू लाइन टेंजेंट है इंटरफेस कर्व को। एक्स नॉट इनिशियल क्वांटिटी एक्स की और वाई नॉट इनिशियल क्वांटिटी है वाई की। प्राइस ऑफ एक्स कम हो गई, बचत लाइन शिफ्ट होकर चली गई रेड लाइन पे, पिवटल शिफ्ट, तो रेड लाइन बनेगी प्राइस ऑफ एक्स कम होने के बाद। टू सेपरेटली शो सब्स्टिट्यूशन इनकम फैक्ट वी ड्रॉ ए हाइपोथेटिकल लाइन। That hypothetical line should have two features. One, it should be parallel to the new budget line, that is red color. And second, it should be tangent to the older inverse curve. And this is green line. Green line is a hypothetical line. It is drawn to separately show the effect of income and substitution effect. It is tangent to the interference curve, parallel to the red line. New equilibrium is at E1. Move from E0 to E1 is substitution effect. Demand of the product has gone up from X0 to X1. This substitution effect, it is similar for every good. For normal goods, income effect would be positive and will take the demand to the right side of X1. That is somewhere at point N. N is for normal good. Whereas for inferior goods, income effect would be negative and will take the demand of good X from to the left of X1, will lower the demand of X and will take it to the left, and that is point I. I is for inferior good. Now, if we look at the initial demand by the X0, and for normal goods, it will go up from X0 to point N, which is a much larger increase than the increase in demand which would have taken place for inferior good, that is from X0 to in between X0 and X1, that is an inferior good. That is why price effect for normal goods is stronger, and demand for normal goods is more price elastic, and demand curve for normal goods will be more flat. Whereas demand for inferior goods would go up only slightly from X0 to somewhere in the middle of X0 and X1. The demand has gone up. Demand curve is still downward sloping, but it is steeper. It is less price effect, smaller price effect, and it is less price elastic. Now we do the impact of increase in price on consumer equilibrium. Initial equilibrium point is E0. Initial quantity of X, good X is X0. Initial quantity of good Y is Y0. The price of X rises, which shifts the budget line to green line. The green line is the new budget line.
which is after the increase in price of good X. To show the price substitution and income fact separately, we draw a hypothetical line which is parallel to the green line but tangent to the indifference curve. That is red line, and that is E1, equilibrium. That is tangent to indifference curve at point E1. Demand of good X has gone down from X0 to X1. That is substitution effect, and that is similar for every type of good. Income fact is positive. Since price has gone up, real income has gone down, demand for normal good will go down. So it will further go down, and the new equilibrium would be to the left of X1. That is point N, normal good. So the demand for normal goods will go down from X0 to point N. Whereas for inferior goods, income factor is negative. Since price has gone up, real income has gone down, demand for inferior goods would go up. So it will go up from X1, and the new equilibrium would be to the right of X1. That is I. If we look at the net effect, the price effect, the demand for good X, if good X is normal good, demand for good X has gone down from X0 to point N, a larger decrease in demand for good X, a price elastic demand, larger price effect, flatter demand curve. But for inferior good, if we assume good X to be inferior, the new equilibrium would be in the middle of X0 and X1. Demand of X has still gone down. Demand curve will still be downward sloping. Price of X is going up. Demand for X is falling, but very little change in demand for X. Small price effect. Low price elasticity demand for inferior goods. A steeper demand curve. Another important topic for market efficiency for paper 4 is market efficiency. Previous exam paper में देख रहा था variant 4.2 में question आया externalities के ऊपर. So this year I am expecting question on monopoly. Public good के ऊपर direct question आना नहीं चाहिए, क्योंकि public good is a topic of paper 2. लेकिन मैंने देखा है कि नवंबर में शायद public good के ऊपर पूरा ऐसे आ गया. मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप मोनोपोली को बहुत तैयार करें. मोनोपोली का टॉपिक मार्केट फेलियर में पड़े पड़. अगर 2 क्वेश्चन आप समझे, 3 क्वेश्चन मैं आपको कैसे पेपर दूं पेपर 4 के लिए, माइक्रो के लिए, तो मैं 3 क्वेश्चन दूंगा. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे इंपैक्ट, प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी नॉर्मल गुड की, और प्राइस इनइलास्टिक इंफीरियर गुड की, मोनोपोली और मार्केट फेलियर, और वेजेस, ट्रेड यूनियन और मिनिमम वेज का ताल्लुक एम्प्लॉयमेंट के साथ. ये मेरे 3 फेवरेट टॉपिक होंगे माइक्रो के लिए. जी, मैक्रो के लिए पर कैपिटा इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड्स, डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज, रोल ऑफ एफडीआई. लेकिन ये अभी क्वेश्चन रोल ऑफ एफडीआई नवंबर के पेपर में आया जी. इक्विलिब्रियम इनकम और एडीएस के साथ आती है जी इक्विलिब्रियम इनकम जी. लीकेजेस और इंजेक्शन का फर्क, कंफ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. 2 ऑब्जेक्टिव इकट्ठे अचीव होंगे. कौन कौन से? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई एम्प्लॉयमेंट. लेकिन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कोहेरेंस, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए. इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्क, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ लार्ज साइज बिजनेसेस. ये मैं ओलिगोपोली और लार्ज साइज बिजनेस, कोलूजन्स, कार्टेल्स, ये जो डेटा रिस्पांस क्वेश्चन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है. बहुत लेबर मार्केट, इसका जो 3rd बुलेट पॉइंट है, ये मेरा गेस्ट पेपर में आता है. लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे सोशल मीडिया पे, अवेलेबल है या हो जाएगी, आज के दिन में हो जाएगी अवेलेबल. मैं आपको विश कर रहा हूँ जी, बेस्ट ऑफ लक. ये हमने तकरीबन 95 मिनट लिए हैं इसको मुकम्मल करने में. अपनी फीडबैक दीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे. और ये कोशिश करेंगे हमारी ये जो वीडियो है ये अवेलेबल रहे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर. आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, हमारे स्कूल को और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. और आपके जब ओल्ड रिजल्ट आ जाएं, आप मुझसे करियर काउंसलिंग के लिए सब्जेक्ट सेक्शन में मिलना चाहें, अपने एडमिशन प्रॉस्पेक्ट को डिस्कस करना चाहें, तो मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ और मैं आपको इंशाल्लाह अच्छी एडवाइस दूंगा सब्जेक्ट सेक्शन पे. अगस्त के जो फ्राइडे आएगा, अगस्त का रिजल्ट के फौरन आने के बाद, आई थिंक 16 अगस्त बनता है, हमारा सेमिनार होगा जिसपे 2 आवर का मुगल आजम फोर्ट में. इसमें हम मुगल आजम फोर्ट गार्डन टाउन में जो है बरकर मार्केट के अपोजिट, उसमें हम आपको सब्जेक्ट सेक्शन के ऊपर, A लेवल के चैलेंजेस के ऊपर
बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारा अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसपे OA लेवल के रिलेटेड बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, आप काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आपको बड़ी यूजफुल चीजें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।